Assalamu alaikum students. Today our presentation and lecture topic is effective presentation skills. As you know that almost all students are fearful about presentations. The fear is twofold. One is the content of the presentation and the other is the lack of presentation skills. If the content and skill are found wanting, the grade will be affected. Some may say that as long as the content is well prepared, the presentation will not be a problem. However, first and foremost is your content about presentation, and all your research work should be arranged in a following manner. Dear students, सबसे पहली बात ये है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए हमें दो तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है. एक ये कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड कंटेंट्स हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, और दूसरा ये कि हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स की कमी होती हैं जो कि दर्ज झेल हो सकती हैं. मगर हमें ये बात भी जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर हम इन्हीं पैरामीटर्स को या इन्हीं पॉइंट्स को अगर रिमूव कर दें तो हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है. एंड दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स और योर बैकबोन ऑफ योर प्रेजेंटेशन. सबसे अहम बात यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन के जो मेन कंटेंट्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. एंड सेकेंडली, डोंट रीड फ्रॉम योर नोट्स. आप प्रेजेंटेशन के दौरान अपने नोट्स से मत पढ़ें. मतलब ये कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए और उसकी वोकैबुलरी भी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फीड होनी चाहिए. और ये ऐसा तब ही मुमकिन है जब आप प्रेजेंटेशन से पहले उसकी 2-3 मरतबा रिहर्सल कंप्लीट कर लें. नंबर 3 इज प्रिपेयर क्यू कार्ड्स विद की वर्ड्स ऑन देम. प्रेजेंटेशन के दौरान आप कोशिश करें कि अगर आप समझते हैं कोई अहम बात है तो आप क्यू कार्ड्स बना लें और उनको वाइट बोर्ड पे चिपका कर दें, या प्रेजेंटेशन के दौरान सामीन कोई ऑडियंस को आप डिस्प्ले पे शो भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूज विजुअल एड्स लाइक स्लाइड्स, चार्ट्स and graphs to illustrate your points. However, don't overuse them. अपनी प्रेजेंटेशन को आप बेहतरीन स्लाइड्स, पीपीटी के जरिए, चार्ट्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए, स्केच के जरिए भी बेहतर बना सकते हैं. ताहम ये बात जहन में रहे कि ज़्यादा इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल भी प्रेजेंटेशन को मुतासर कर सकता है, जो कि मनफी असरात की सूरत में आपको सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर योर प्रेजेंटेशन. कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन वाले दिन या प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपका ड्रेस प्रॉपर हो, मुनासिब हो, बट डिसेंट हो. आप या तो बहुत ज़्यादा जर्क भर के भड़कीले लिबास भी मत पहने, या बहुत ज़्यादा तैयार होकर मत आए जिससे आपकी कन्फ्यूजन जाहिर होने लगे या बहुत ज़्यादा आप ओवर लगने लगे. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीक क्लियरली एंड लाउड इनफ फॉर योर ऑडियंस टू हेयर यू. Look at your audience when you speak. प्रेजेंटेशन के दौरान कोशिश करें कि ऊंचा बोलें और क्लियर आवाज़ में बोलें ताकि सामीन आपको आसानी से सुन सकें, और सुनने के साथ साथ उनके साथ जब आप गुफ्तशनीद कर रहे होते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उनके साथ आई कंटेक्ट भी रखें. नेक्स्ट इज वेरी योर पिच एंड टोन टू एम्फसाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. डोंट स्पीक इन मोनोटोन. कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई अहम बात है तो उस पर जोर देकर उस बात को ताकीदी लहजे में बयान करें ताकि आपका सेम ही लहजा ना हो जिससे बोरियत या उकताहट महसूस होने लगे सामीन को. नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड प्रैक्टिस अ फ्यू टाइम्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू चेक ऑन योर पोस्चर एंड जेस्चर्स. प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको चाहिए कि आप कई मरतबा आईने के सामने घर में या कमरे में खड़े होकर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी झिझक, शाइनेस, शर्मिलापन दूर हो जाए. नेक्स्ट इज एंड योर प्रेजेंटेशन विद इन द एलोकेटेड टाइम. कोशिश करें कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वक्त मुकर्ररा पर उसको ख़त्म कर दें. एंड last point is summarize your main points before ending your speech. A lucid explanation scores point.
کوشش کریں کہ پریزنٹیشن کے مقررہ ٹائم پر اپنی پریزنٹیشن کو ختم کرتے ہوئے آپ اپنی تمام پریزنٹیشن کو سمرائز کر دیں اور اس کو سمرائز کرتے ہوئے ایک شارٹ مگر مختصر ہونے کے باوجود مکمل قسم کا خلاصہ بھی بیان کر سکیں. However, there are a lot of tips and strategies which improve your presentation skills. Which you can show in your book and notes. But there are a lot of tips or strategies, but most important tips for presentations are these, and these are around about 30. Number 1 is preparation and knowledge. During presentation, try to prepare yourself and a detailed background knowledge of the topic. Second point is, as a presenter, remember and apply Eleanor Roosevelt maxim that no one can imitate me without my permission. When you are a presenter, you are in charge. The audience generally accept this, and you are with your rights to control anyone who does not. Next important point is, remember also that depth of conviction counts more than height of logic, and enthusiasm is worth more than knowledge, which is apparently attributed to David Peebles, about whom I have no further details. Please let me know if you do. Passion is therefore a very powerful component in any successful presentation. Next important tip is, good presentation is about entertaining as well as conveying information. It means that کہ آپ کی presentation کی بہترین ٹیکنیک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ طنز و مزاح کے ذریعے اور لائٹ لیول پہ مزاح کے ذریعے بھی اپنی presentation میں انٹرسٹ پیدا کر کے سامعین کو آپ ان کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر سکتے ہیں. And remaining points are also belong to same points, but you must keep in mind that there are a lot of tips like these 30 points, but the most important point which you must apply in your presentation skills is fun, humor, interest, participation and diversion that you can use to bring your presentation to life and keep your audience attentive and enjoying themselves. Some people in the presentation field refer to these presentational elements as spice, like the spice of a meal. Spice in a presentation gives it a lift, stimulates the senses and adds texture and richness. Here are examples of the many sorts of spice elements you can add to a presentation. پریزنٹیشن کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ سامعین کی دلچسپی، ان کی شمولیت اور ملٹی ڈائمینشنز میں انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز کے ذریعے ان کی اٹینشن کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسپائسی ایلیمنٹس کا رول مد نظر رکھیں. لائک ڈش اسپائسی رائس اینڈ ڈیلیشیس ڈشز. سو پریزنٹیشن میں بھی آپ اسی طرح کی بہت ساری اسپائسی یا بہترین قسم کی ٹپس یوز کر سکتے ہیں، لائک اسٹوریز، اینی اسٹوری تھرو کوشچنز، پکچرز، کارٹونز، ویڈیو کلپس etc., diagrams, video clips, audience participation exercises, funny quotations, inspirational quotations, acronyms, fables, books recommendations, body language, games, exercise, etc. And you must keep in your mind that while presentation, your visual aids also play an important role in your presentation. For example, if your presentation is going on power project, then the sound system is very effective and useful for you.
اگر آپ پریزنٹیشن اچھے طریقے سے دینا چاہتے ہیں اور آپ پاور پروجیکٹر کا استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر، یا کوئی کلپ آپ شو کر رہے ہیں، تو اس میں ساؤنڈ اور ویڈیو پلس آڈیو کے کردار کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی پریزنٹیشن کو آپ پاور پوائنٹ کی سلائیڈز کے ذریعے ایکسپلین کریں، اور اس میں آپ کوئی چھوٹی سی کلپ یا ویڈیو کا سہارا ضرور لیں تاکہ اس سے آپ کی سامعین کی اٹینشن آپ کے ٹاپک کی طرف کمپلیٹلی فوکس کر سکیں وہ لوگ، اور آپ اپنا مین جو مقصد ہے وہ ایکسپلین کر سکیں. سو دیر آر لاٹ آف ٹپس، بٹ یو اسٹوڈنٹس just can apply round about 15 plus points for your presentation skills, and hopeful these tips you will explain your examination point of view. So this is the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.